Assalamu alaikum guys and welcome back with HBMPTE. Today we are going to Powerscourt, which is a really famous destination in Ireland. You have to be a fit guy, or you have to be healthy to go up and down. You can see that there is a mountains on the side and I'm going down, and on the right side there's a beautiful greenery, बहुत ही प्यारी greenery है यहाँ पे, और holidays के लिए काफ़ी अच्छा spot है ये. And obviously you can do barbecue. You can bring with your barbecue stuff and you can do on the barbecue tables. They provide you the barbecue tables on the sides. So there's a track and there is a waterfall which is very famous for powerscourt. A lot of famous movies, they shoot down on this place. It's a popular culture. There's a famous golf club, and here is a me. So I'm just doing voiceover because don't have that much time over there. There's a lot of people around. So there's the Nath I'm singing. You can see how beautiful is the big mountains. You can do hiking as well. So we're going to play a football. My friend is saying, "You're making a video." I said, "Yeah, you're making video for our small YouTube family." And here we go. We start, and he's going to kick the ball. So I'm just going over there to pick up the ball. तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे. देखिए ग्रीनरी कितनी खूबसूरत है, और ये देखेंगे इन्होंने फिर वॉइस नेशन में इंग्लिश में भी करूँगा, उर्दू में भी करूँगा, क्योंकि so I show you guys we have our subscribers from UK as well and from US as well, so that's why we have to speak a little bit English and उर्दू भी साथ साथ में बात करेंगे हिंदी में. So you can see the waterfalls is a very famous waterfall, Powerscourt. And Powerscourt waterfall is very famous in Ireland. So you can search in the Google. So I'm just coming back from that side because there are a lot of families over there. They are enjoying, they're mesmerizing with the spectacular view. And I'm just coming back to see that the camera is working or not. So here I am in front of you guys. I'm just going to pick up the phone and I'm going to show you around. So here I am in front of you guys. So you see the trees, the grounds. I think I will say something now, or because I'm exhausted. वाटरकोर्ट और ये वाटरफॉल देखें. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. ये पीछे का व्यू है. फैमिलीज के साथ आ सकते हैं आप. और हम फुटबॉल खेल रहे थे इसलिए सांस चढ़ी. Very careful around this place because this place is up and down. This is a close view, you can see that. तो ये एरिया And look at this. You can go down and ये देखें. a lot of up and hill on this place. You need to be very careful if you're going with your families or friends. Adults are fine. I mean, they don't have any problem to go. But especially if you're going with the family, the kids, you need to be. ये नीचे वाली साइड है, पीछे से देखें. ये देखें. यहाँ पे भी ट्रैकिंग की जा सकती है, मगर चढ़ेगा कौन? यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे से व्यू. ये अच्छा व्यू है वाटरफॉल का, पावरस्कोर्ट का. ये बस आपको ये एरिया दिखा रहा हूँ. बाकी जो इसमें गॉड के लिए वो एरिया बिल्कुल आगे टूरिस्ट टाइम है, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस प्लेस है आगे जहाँ पे बोट के पास, क्योंकि वहाँ पे पत्थर हैं बड़े बड़े और नीचे पानी जाता है वहाँ पे. समर में लोग जहाँ वहाँ नीचे जाके वहाँ पे मतलब नहाते भी हैं उसके नीचे. It's very beautiful, but you need to be very careful, especially when you are with the kids.
You see there, wow, what a beautiful view. Now I'm coming back toward the camera. Obviously, the families are with us, so I took her on the hand, and she was like, "No, no, no, I have to stay here. I want to do enjoy, but you know, it's not good for the kids, so I have to took her back from that side and just hold my camera and just want to show you around." And still she started crying. चलो आओ And हैंड पकड़ बाबा obviously my mother is to the other side, so you can see the close view. Look at there, a lot of tourists over there. मेरा And now she's happy. And there's a very hard stones, the big stones. See the back side. And now I'm going a bit the other side. A lot of tourists, you can see behind it. You can see the mountain. You can see the river, and she's keep insisting that I just want to go there. Obviously, I cannot let her to go the other side. But वो रो रही है तो मुझे उठा लो, मैंने उधर जाना है. Isn't it? Yes, on the other side, you can see me. I was trying to get in the train, especially for you guys. Although it's not safe, but still we are capturing some awesome moments. So here I come in the video, guys. This is a close view as well. Oh, there's a security guard behind us, and you know that the film is going on. There's very famous movies there shoot in this place. Though I was going to take a picture of me and to get in the frame. The security was there. He said you can't do that because the film is going on and it's not safe, because they don't want to their movies the set is leaked from the blog or something. So he was saying no, you can't do that. So obviously you have to get back from that side and just coming back from bit in the ground. I have to pass this place. They see the people in front of me. There's a security guard on my right side. He said so you cannot shoot over here. So I'm just passing from that side. So going ahead to see. The security आ गई. There's another view of the waterfall. उधर नहीं जा सकते. तो आप दूर से देखें. ये देखें. तो देखें कितनी प्यारी माउंटेन. पीछे देखें. तो आप बारबेक्यू के लिए भी यहाँ पे आप सामान लेके आ सकते हैं, पका सकते हैं. उन्होंने दिया हुआ परमिशन दी होती है. आप वो ले आए सारा कुछ सामान जो भी बारबेक्यू में यूज़ होता है, मसाला वगैरह लगा के ले आए. तो यहाँ पे आप वो पका सकते हैं और आप इस तरह समर में स्पेशली आप इंजॉय कर सकते हैं. क्योंकि ये वीडियो काफ़ी देर पहले शूट की थी, तो आज मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ. कुछ ना कुछ आता रहेगा. तो ये देखे खेल भी सकते हैं आप, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, तो इंजॉय भी कर सकते हैं फैमिलीज के साथ. ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त जगह है. मतलब आप इंजॉय कर सकते. देखे काफ़ी सारे फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं, बच्चे भी आए हैं साथ, तो इंजॉय कर रहे हैं. तो ये भाई ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है वो यहाँ पे आते हैं. इंडियंस हैं, पाकिस्तानी, जितने भी ओवरसीज़ हैं वो काम करते रहते हैं. तो अगर आपको टाइम अगर आपका बन पाए तो आप यहाँ पे आके एंजॉय करें, अपनी कंट्रीज़ को लेके आए यहाँ पे दोस्तों वगैरह के साथ आए ज़रूर. क्योंकि बाहर जाके लोग ज़्यादातर सिक हो जाते हैं. मतलब एक सिक ही हो जाता है. मतलब सेम रूटीन चल रही है, कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, तो फिर बंदा तो आ जाता है. ज़रा ऑब्वियसली माँ बाप से दूर, अपनी फैमिली से दूर, लोगों का एक ही धुन होता है, यार पैसे कमा ले. मगर आपको अपने लिए भी टाइम देना चाहिए. आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और ये देखें, ये पीछे से वाटर कोर्ट का एक व्यू आ रहा है. देखें पीछे से कितना खूबसूरत है. माउंटेन बहुत बड़ी है. यहाँ पे हाइकिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हाइकिंग भी कर सकते हैं और बीच में ट्रैक दिया हुआ है, जॉगिंग भी कर सकते हैं. मगर ये कि आयरलैंड में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेन बहुत ज़्यादा होती है. तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किस दिन आप उस दिन आए जहाँ रेन ना हो रही हो. और ये देखे बीच में ट्रैक. ये वाटर कोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है. दिस इज टोटली ऑन ऑपोजिट साइड.
and there's a very big golf club on the other side where the shooting is going on. You cannot go ये over there हम जा because रहे there's a हैं lot of पता नहीं कहाँ, strict security. If you want to पावर्स get कोर्ट में into कोई the रास्ता place, you है। have to pay a 10 euro, 15 euro or something. And you can see this mesmerizing view during. ये हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, पावर कोर्ट की दूसरी साइड पे। आप देखें कितना प्यारा व्यू है पीछे। ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें. दिस इज वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन इन आयरलैंड. यू मस्ट गो विद योर फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and turn notifications. See you in the next video. Till then, take care of yourself and bye bye.